Good morning, guys. My name is Birendra and I'm the core mentor in Civils Daily. Today, I'm going to talk about a very important aspect from this exam point of view because we have like 55 days left for the prelims and we have been receiving so many queries on our platform. So, I thought to just make a short video and just to brief you about everything, right? But before that, guys, I really wish and hope that you guys are safe and healthy because this is a tough and very hard time for everyone. Every second or third person is infected, so it is the health should be your top priority. Otherwise अगर इस मोमेंट पे अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो पढ़ाई करना, जॉब करना, it will be very difficult to manage everything, right? Okay, guys, so let me come to the main point. Like I said, the main reason is because why I'm in front of you is because prelims जैसे जैसे पास आ रहा है हम लोग के पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं और वो क्वेरीज जो हैं इट इज़ मोस्टली ऑल अबाउट द प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए। बिकॉज द रीज़न इज गाइस इट डज नॉट मैटर कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, कहाँ से करंट अफेयर पढ़ा है, कहाँ से जीएस पढ़ा है, राइट। व्हाट मैटर इज कि लास्ट के एक दो महीने में हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव रेड इन एंटायर ईयर, राइट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरे साल तो बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी जगह से करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, जीएस के टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, बट इन ये जो लास्ट का फेज होता है इसमें हम लोग कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं, रिविजन नहीं कर पाते हैं बेसिकली। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग से हम लोग फोकस नहीं करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम मतलब हौश-पौश हो जाती हैं कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, राइट? और हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 15-20 साल के नहीं लगाए हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो दैट एंड जस्ट ट्राई टू एनालाइज the pattern of the UPSC, what are the important areas from where the UPSC has picked up the question, and just try to focus on that because this is the time when you have to narrow down your approach, guys. You cannot just read and revise everything whatever you have read so far. So narrow down, आपको अपनी approach करनी पड़ेगी, only then you will be able to revise everything very effectively. ओके गाइस, सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज कि जो मोस्टली जो क्वेरीज आ रही हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज़ इररिलेवेंट है जो हम लोग स्किप कर सकते हैं। सो गाइस सी, अगर ऑन दिस आई मीन इन दिस केस व्हाट आई विल से, देखिए अगर इफ द क्वेश्चन विल बी कंसेप्ट बेस्ड तो आपने जो पूरे साल पढ़ा होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी उसके थ्रू यू विल बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन, राइट। But if the question is if it is based on some facts, right, then it is very difficult to crack that question because वहाँ पे आप logic नहीं लगा सकते हो, कोई concept नहीं लगा सकते हो, though you can apply some theorem, but again you will not be confident. And every year UPSC, just put a few questions from the which are very much factual in the nature. जैसे मैं example लेता हूँ कि अगर आप previous years questions देखोगे तो UPSC has asked many questions from the foreign travelers, right? So foreign travelers में who visited India during ancient or medieval time, तो इस टाइप की जो फैक्ट्स हैं इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो, either you know it or either you don't know it, right? बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। सिमिलरली माउंटेन रेंजेस हो गए, फॉरेस्ट टाइप्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, स्कीम्स हो गई किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए। तो गाइस ये सब चीज़ें हमको पता होता है कि हाँ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट मोमेंट पे हम लोग कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कंसोलिडेट करने भी जाओगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गाइस वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड निकालो प्रीलिम्स, जिसमें निकालो प्रीलिम्स में दो पार्ट हैं। इट हैज बीन, आई मीन देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज द स्पॉटलाइट एंड द सेकंड इज द मिनी टेस्ट। इन स्पॉटलाइट व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड द एंटायर टाइम टेबल इनटू थीम्स। थीम्स जो हैं वो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट मेड द थीम्स रैंडमली कि कुछ भी उठा के थीम बनाई हुई, नहीं, वहाँ उन सब थीम से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पहले पूछ रखे हैं एंड वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन। सो वी डोंट वांट यू गाइज टू पुट अप ऑल योर एफर्ट एंड इन्वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग दोज फैक्ट्स। तो हम लोगों ने क्या किया है, वो थीम वाइज हमने टाइम टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें हम लोग जितने भी उस थीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यू विल फाइंड ओवर देयर। Okay, so this is one component. Second component is the mini test. Guys, the mini test will consist of 20 questions. Okay, the questions will be based on the current affair as well as the GS.
So many student has asked me why 20 questions only, sir. See guys, we are conducting this test every alternate days. Okay, so the thing is, अगर हम लोग डेली 10 15 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और सेकंड साइड अगर कोई स्टूडेंट है जो वीक में एक दिन बैठता है और 3 4 मॉक टेस्ट लगाता है, तो द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टूडेंट इज कि जो पहला स्टूडेंट है हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट 20 30 और मे बी 15 क्वेश्चन एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डेज, उसको अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होता रहेगा बहुत ही फ्रिक्वेंटली. बेस्ड ऑन दैट रियलाइजेशन ही विल मेक हिज स्ट्रैटेजी कि क्या किस टॉपिक में वो लैग कर रहा है, राइट. जैसे अगर पॉलिटी का टेस्ट उसने आज दिया, भले 20 क्वेश्चंस लगाया, राइट. अगर 20 क्वेश्चंस में इफ ही इज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस, इट मींस दैट ही लैक नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. तो वो अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से डेवलप कर सकता है कि हाँ भाई, मुझे अब इस वीक पॉलिटी ही पढ़ना है, सो दैट आई कैन जस्ट फिनिश द रिविजन एंड एवरीथिंग जहाँ पे मुझे टेस्ट में प्रॉब्लम हुई है. और अगर वही चीज आप वीक में एक दिन करके एक दिन बैठते हो और मॉक टेस्ट लगाते हो, तो क्या होता है कि पूरा वीक वेस्ट हो जाता, मतलब वेस्ट तो नहीं होता है, आई विल नॉट से कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट उसमें क्या है, रियलाइजेशन बहुत धीरे धीरे होगा आपको कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, इंप्रूव कैसे करना है. और अभी हमारे पास वैसे भी 50 55 डेज बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मैं चाहता हूं, हम लोग चाहते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट करें इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो और फ्रीक्वेंसी बहुत इसमें ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ टेस्ट के लिए. तो उससे क्या है, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं. So guys, I mean, this is a free of cost. I mean, this Nikaalo Prelims, you don't have to pay anything. You just have to enroll and you have to register. After that, you will be able to access the content and everything. It is posted on the Civils Daily website. And one more thing, guys, I mean, if anyone is a consistent performer in the mini test, like for 5 consecutive days, we are going to provide access to the Civils Daily Current Affair magazine for 1 year. Okay, so you will get the magazine for 1 year. Okay, current affair की जो magazine है Civils Daily की, and along with that, the top 5 performer will also be able to interact with our core mentor team, and they can discuss each and everything about the preparation, whether it's a prelims, whether it's a mains, whether it's a essay. I mean, they will get an opportunity to speak with us, you know, with our core mentor team, and so that we can plan an entire road map for their preparation. तो आपके पास जो भी डाउट्स होंगे, चाहे वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, आप जो हमारी जो टीम है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. एंड फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट, like whether you are preparing for 2021 or 2022, just fill up the Samavanya form and we will be glad to get back to you. Okay guys, so focus on this. Like I said, this is not the right time to just get confused with so many things. Okay, focus on the valid sources which are, and I mean, the valid sources is only the UPSC previous year's questions, right? So just go through it. Try to pick up the important areas, the themes from where the UPSC picks up the questions every year, whether they are static or whether they are conceptual. For static, like I said, Nikaalo Prelims will take care of it. Don't worry about it, okay? And for mock test, just try to attempt the mini mock test every alternate days. And if you will have any questions or queries, please get back to us. Just drop a mail, or maybe you can just put your comment under the section, and we will get back to you. Okay guys, so this is all about, and please take care, stay healthy, and eat healthy. Thanks. Bye. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.